Hi guys, welcome back to my channel. I am Insane. Today I have created this beautiful Indo-Western look, and the amazing part of this video is that everything that I have used is under Rs500. So till moisturizer to primer to foundation to even concealer, lashes, lash glue, everything is under Rs500. So must check this video out. And if you are new to my channel, then please don't forget to subscribe before you leave. And yeah, let's begin. The first thing I'm going to use is a moisturizer, and I'm using the Good Vibes Multivitamin Skin Enhancement Face Cream. It's a really good moisturizer before makeup, and as in general it's a really good moisturizer. I believe it has no parabens, no sulfate, cruelty free, and no mineral oil, but it does have a fragrance or a perfume in it, which is it's quite strong, I will say. So if you're someone who doesn't like perfumes or scents in their moisturizer or any of their makeup, avoid the Good Vibes one. As you guys can see, I have used quite a lot of this, and I'm just gonna put it on my face. I really like it. The only drawback is the packaging. Can you see this? Like, I'm going to use this primer. This is a really new primer for me. This is by the brand called Shryoan Face Primer. It is the milk based primer. Now the interesting part is about this primer that it is mattifying, but at the same time it also hydrates my skin, which is really weird because I usually seen products which are mattifying doesn't hydrate, but this is something else. I think because it is a milk based product, that's why it is more hydrating. I do like to apply a generous amount of this because it's so good. It feels so different. Also, it smells really good as well. See what I'm saying? It will transfer into the matte, like it's going to mattify, but it won't mattify in a very drying way. So if you are somewhere normal to dry skin person, I must say check this primer out. It's really good. I'm looking forward to check more products from this brand as well. So guys, this does have thematic one, but ये इतना भी blurring या pore filling primer नहीं है. If you are looking for something more pore filling or blurring, I must say I think you must check it out some other primers. This is much more like a hydrating and a little slightly pore filling, nothing too crazy, okay? And I must say you must check this primer out because I really enjoy this. I don't know if it does last my makeup or not, but it does feel super good. So guys, I generally do not believe in eyeshadows primer. I use my concealer as my eyeshadow primers, and it works really well. मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, एंड अगर आपको इसका रिव्यू देखना है तो मैं आपको यहाँ पे लिंक डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हो. ये कंसीलर बहुत अच्छा है. स्पॉइलर अलर्ट, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस. The only down part about this that has only 6 shades. So अगर आपको शेड मिलता है then go grab this. It's a really good one. This is my oldie trusted goodie. I love this palette so much. This is the Wet n Wild का Rose in the Air eyeshadow palette. ये 10 शेड्स आते हैं इसमें. यहाँ पे ये और ये वाला शिमर है, बाकी सारे मैट्स आई शेडोज है. इसको सबसे पहले मैं अपने क्रीज में पुट करूँगी. लॉट ऑफ पीपल डोंट नो क्रीज क्या होता है. क्रीज वही होता है, आपने आईज ओपन किया, क्लोज करना है आपको अपने आईज, और आपको ओपन करना है, और जहाँ पे आपका गड्ढा दिख रहा है ना ऐसा, वहाँ पे आपका क्रीज है, वहाँ पे वो आई शेडो को ब्लेंड करना है. दैट इज वेयर योर क्रीज इज. अभी मैं इसको और प्रिसाइजली प्लेस करूँगी अपने क्रीज पे, और मैं उसको ज़्यादा ब्लेंड नहीं करूँगी. आई एम मेकिंग मैं उसको इनर कॉर्नर्स पे भी ले रही हूँ कलर को. आई एम टेकिंग दिस डार्क ब्राउन शेड एंड आई एम गोना प्लेस इट ऑन आउटर कॉर्नर्स. जो अभी मैं शिमर लगाने वाली हूँ, मैं ये वाला लगाऊंगी. सो गाइस, आप देख सकते हो कि मेरी ये आईज पे काफ़ी रिफ्लेक्टिवनेस और थोड़ा मैंने स्मोक आउट किया है. तो जो रिफ्लेक्टिवनेस जो मेटालिक से आपको दिख रहा है वो स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो है. दिस रिटेल्स इंडिविजुअली फॉर 199 पर. अगर आप अमेजोन में जाके इसको परचेज करते हो
पैक ऑफ 6, तो आपको ये 600 में मिलता है, विच इज़ लाइक हाफ अ डिस्काउंट। और अगर आपको इंडिविजुअल खरीदना है तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर आप नायका से भी खरीद सकते हैं इसको। तो मैं इसका आज 03 शैम्पेन जो शेड है मैं वो यूज़ करने वाली हूँ। और द बेस्ट वे टू यूज़ दिस लिक्विड आई शेडो इज़ टू यूज़ अ फ्लफी ब्रश। तो ऐसा काइंड ऑफ अ फ्लफी ब्रश रहता है, सी। अब मैं ये काजल यूज़ कर रही हूँ, ये कलरबार का मेस्मराइज काजल है। So these are the calailis. I don't know how to pronounce this name. I'm so sorry. These are the fork mink eyelashes. These are the multi-pack. So it comes with the 3 pairs of lashes. They all look quite different from each other. Similar, but they are different if you look very closely. It contains 3 pairs of lashes, as I said. It is easy to apply, lightweight, and it is reusable as well. The best thing about this pack is that it also gives you an eyelash glue, so do not need to buy a separate eyelash glue. Now let's move on to the face. I'm using this Maybelline का Fit Me matte and poreless foundation in the shade 230 natural buff. It is retailing price says it is 550, but आपको हमेशा Maybelline के products कभी ना कभी like अंडर 500 में आपको ये फाउंडेशन मिल जाएगा। अगर आपको नहीं भी मिलता है तो ये लोग ने मिनी वर्जन जो है ट्यूब वाला वो 299 में भी अवेलेबल है, सो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। ये मेरी फ्रेंड का है, मैंने उससे मांगा था टू शो यू गाइस। इट्स अ रियली गुड फाउंडेशन इफ यू आर बिगनर और इफ यू आर लुकिंग फॉर नाइस वन। ऑल्सो इसकी जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी है। अगर आपने ये ट्राई कर लिया और आपको ये नहीं बाय करना है, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई द नायका स्किन जीनियस फाउंडेशन। इट इज़ रियली नाइस एज वेल। ऑल्सो द वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन, दैट इज ऑल्सो रियली गुड। टुडे आई एम यूजिंग द Maybelline Fit Me one. कंसीलर सेम स्विस ब्यूटी का है। गाइस मैं भी कॉन्टर करने वाली हूँ। आई एम यूजिंग द शिवाना कॉन्टरिंग का पैलेट। दिस हैज 2 colors into it. This is very ashy. I use this color. So now I'm gonna quickly blend that, because blending के टाइम पे थोड़ा लो हो ही जाएगा वो। So always place your contour little high, because blending के टाइम पे वो और नीचे आ जाएगा। Never forget your double chin. अब ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ दिस इरैक का ऐसा ब्लश आता है, ऐसे पैन में आता है। दिस वाज लाइक मैंने इसको 100 रुपीज मेकअप चैलेंज में यूज किया था। इट्स सो फ्रिकिंग पिगमेंटेड, आई विल शो यू। The next thing we're going to use is the highlighter. This is the Wet n Wild का Precious Petal Mega Glow highlighter in the shade Precious Petal. I mean, it's a really beautiful highlighter. It is one of my favorite highlighters. We'll see why. See how blinding that is. So guys, I'm putting my mascara. This is the Maybelline Hyper Curl Easy Wash Mascara, and I'm just going to apply mascara because I'm putting falsies, so I'm not much focusing on my mascara today. कभी भी आप लैशेस लगा रहे हो या मस्कारा लगा रहे हो, मेक श्योर आपने टाइट लाइंस पे ना ब्लैक काजल ज़रूर लगाओ।
otherwise it does not look much flattering. Sometimes I also don't do, but I can totally see the difference doing it and not doing it. So guys, I'm taking this Wet n Wild का Mocha-licious lipstick. It is I think somewhere under 299 rupees का है ये. It's a beautiful color. So I'm mixing this Lakme का enrich matte lipstick in the shade BF11. This is also under 500 rupees for sure. This is much more like a brown. So guys, that's it for my video. I hope you guys enjoyed this video, and if you like this kind of videos, then don't forget to give it a big thumbs up and comment down below if you have any questions or how did you like this video basically. And if you haven't subscribed to my channel yet, you should do, because that's rude. You're watching the entire video and not subscribing to the channel. Why? I'll see you in my next video. Bye.